And let's first get to a breaking reaction coming in from the government on the farmers' protest. Union Minister Ravi Shankar Prasad has put out a tweet on the farm reform saying that the new laws do not end APMC mandis and that mandis will continue to function. He's also said that the new law empowers farmers to sell their produce anywhere. This even as Union Minister Prakash Javadekar has also put out a tweet saying farmers will get MSP. Mandis are here to stay. No one should spread rumours. So the government going all out to set the record straight as far as these new farm laws are concerned. They've time and again reiterated that farmers only stand to benefit and that there is a false narrative being created. Anisha Mathur joining us with more details on this. Anisha, repeated efforts there from the government to reach out to the farmers and to continue to state that the farm laws benefits them, that there is an attempt to mislead these agitating farmers. Well, yes, Akshita, and we're here at Ghazipur and farmer leader Rakesh Tiketji is here with us. Sir, we'll just get a reaction from him because we just spoke to him also. Sir, जो अभी लॉ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है और भी पॉलिटिकल लीडर्स बीजेपी और मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इन फार्म एक्ट से कोई नुकसान नहीं होगा, एमएसपी पे कोई रुकावट नहीं है, मंडियों पे कोई रुकावट नहीं है, किसान जहां चाहे जाके अपना बेच सकता है धान। नहीं, कहाँ बेचें? वो जहाँ का स्थान हमको बता दो जहाँ पे एमएसपी से कम पे खरीदना होती हो। किसान को व्यापारी न लूट लिया पूर्ण रूप से। लॉ मिनिस्टर तो दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं, चमकीली कोठ में बैठ के कह रहे हैं, कागज पर लिख के कह रहे हैं। भाई हमने ये कहा है कि एक कानून बना दो कि जो सरकार ने रेट घोषित कर दिया है उसके कम पे खरीद नहीं होगी, ये बना दो तो किसान अपने आप लड़ने लगाए तो कानून बनाने का काम कर दें। सरकार तो कह रही है आपको जहाँ पे दाम सही मिल रहा है आप वहाँ पर बेचिए, मंडी तो बंद नहीं है, आप प्राइवेट में बेचिए। तो प्राइवेट वालों ने तो लुटा, प्राइवेट नहीं तो लुटा है ना। एक 1800 रुपये क्विंटल का धान 800 में ले लिया, तो ये प्राइवेट नहीं तो लिया है। आप क्या चाहते हैं अब यहाँ पे आज की क्या स्ट्रैटेजी, आगे क्या होगा? हम कहीं नहीं जाते, बुराड़ी की तरफ ना बुराड़ी नहीं जाते, एक घोषित जेल में नहीं जाते हम। या तो जो अप्रूवल जेल है तिहाड़ उसमें भेज दो और नहीं तो हम वहां नहीं जाएंगे, एक घोषित जेल है वो। तो यहाँ रुककर भी आपको लग रहा है सरकार बात करेगी और लोग आवेंगे? सरकार तो कह रही है बुराड़ी पहुंचिए तब हम बात बुराड़ी नहीं जाते, हम बुराड़ी नहीं जाते, जेल भेज दो हमें। हाँ, बुराड़ी नहीं जाते। Akshita, you can see the very clear message coming in from the farmer leaders here. Mr. Tiket also clearly saying they're not willing to leave from here and they're not happy with the explanations and whatever the government is saying. Government, of course, is trying to make the farmers simmer down, understand what the law is, how the law is going to benefit them. But the farmers are not ready to believe that there will be any benefit from this law. In fact, they're saying that if you give free rein to the private parties, if you give free rein to the corporates, they will only exploit the farmers more. That is what the biggest fear of the farmers, at least here at the Ghazipur border in UP is. And that is what the farmers at various points, who've been protesting at various points all around Delhi, have been saying for several days, that unless the government fixes an MSP, unless the government gives a guarantee of the minimum price that their produce will be sold at, corporates and private parties will simply exploit the farmers. Very strong statement there. Ensure that these fears of the farmers are calmed down. Yes, very strong statement there by the farmer union leader saying that we'd rather go to jail, we will not go to the Burari ground. Anisha, thank you for getting us that live report.